Bismillahirrahmanirrahim. This is APSEX online sport program, APS Sport Road Middle Wing Boys Class 5 Week 6 Physics Assessment. Let's start our lesson with हदीस नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। अल्लाह ताला ने बहुत बार कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। इसका मतलब है कि नमाज पे अल्लाह ताला ने बहुत ज़ोर दिया है। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, ख़्वाह वो किसी भी हालत में हो। अगर हमें कोई इंसान हमें एक दो दफ़ा कॉल करके बुलाता है तो हमें बुरा लगता है कि वो बार बार हमें बुला रहा है, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुन रहे। तो अल्लाह ताला तो हमें दिन में 5 दफ़ा कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते। और जब हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उसकी बात से इनकार कर रहे हैं, तो क्या कोई मुनकिर मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। हम किसी इनकार करेंगे, हम अल्लाह के हुक्म का इनकार करेंगे, तो हम कैसे अल्लाह के बंदे हो सकते हैं? हम तो उसके परहेज़ पर और मुत्तकी बंदे फिर हो ही नहीं सकते जब हम उसका हुक्म नहीं मानेंगे। Recap. Last week we have learned how to multiply by tens. We have learned how a number can be multiplied by tens. किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो we just add 1 0 at the end of that number. You can see in the example that is 5 multiplied by 10. After multiplying 5 by 10 we get the answer that is 50. हम just 0 हमने end पे add कर दी। इसी तरह when we are multiplying a number with 100 we'll get 2 zeros at the end of that number. That means 5 multiplied by 100, answer will be 500. If we are multiplying a number with 1000 we will get 5 multiplied by 1000, answer will be 5000. 3 zeros will be added at the end of that number. Now dividing by tens, we have also learned how to divide by tens. When we are dividing a number by tens, then we just cut 1 0 from end of that number. For example, we are having 500 था हमारे पास। जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमने 1 0 कट कर दिया। 500 में 2 zeros थे, एंड पे हमारे पास 1 0 रह गया। दैट मीन्स आंसर इज़ 50. आफ्टर कटिंग 1 0 we are left with 1 0, that is 50. Let's start our topic of this week is we're having 3 topics, that is dividing a number by 10 and 100 and 1000. We have done dividing by tens. In this week we're going to learn how to divide by 100 and 1000. Then the second topic is order of operations. Third topic is decimals. Objectives. What we are going to learn in this week, we learn how to divide a number by 10 and thousands, then how to open the bracket, how will you use the order of operation properly. We will use how to open the bracket, then we'll learn how to use DMAS rule, then we'll learn left to right rule, and to multiply a decimal with tens, hundred and thousands. Now our first topic is dividing a number by 100. As we have learned in the previous topic that if we are dividing a number by 10, we'll just cut 1 0 from that number. Now when we are dividing a number by 100, we will move the decimal point to 2 places to the left. You can see in the example that is 380. 380 is the question, and we will move decimal point to 2 places to the left. That means it was at the end of the 0. Now after moving to the left it became at the after 3 and before 8, so it is 3.80. we are moving the decimal point to the left side. We went to divide, we move the number 2 places to the right in the place value columns. You can see we have moved to the left side. Now in the next example we can see it is 0.80 divided by 100. After moving the decimal we are getting the answer, that is 0.8. Now dividing by 1000, to divide a whole number by 1000, move the decimal point 3 places to the left. We'll move to the left how many places? 3 places. हंड्रेड्स के लिए हम 2 प्लेसेस मूव किए, अब हम 3 प्लेसेस लेफ्ट. 5.0 था, वी आर हैविंग 1 नंबर दैट इज़ 5
जो कि पॉइंट से पहले 2 ज़ीरोज़ हमें ख़ुद से ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ज़ीरो पॉइंट से पहले होने चाहिए, पॉइंट के बाद सॉरी होने चाहिए, तो दैट इज़ 0.005. Now the next topic is order of operations. Order of operations we're going to learn about BODMAS, that is brackets, order, division, multiplication, addition and subtraction. Now when we are using this BODMAS, what is it? Bracket. That means if we are having brackets in our questions, first of all we are going to solve the brackets, then order. These questions are not according to your level, but this means that order, that is the order of the numbers. Then division, we're going to solve division, then multiplication, then addition and then subtraction. Now how to apply this method? Here you can see we're having plus, division and multiplication, 3 operations we're having, and how can we solve it? We have learned that first of all सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट कहाँ है? ब्रैकेट डिवीजन में है. तो पहले हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 4. नाउ यू कैन सी कि हमारे वहाँ पे हमारा डी मैथ्स रूल भी अप्लाई हो गया. डी डिवीजन हमारी फर्स्ट में सॉल्व भी होगी. अगर हमारे पास यहाँ पे ऐड प्लस माइनस कुछ भी होता तो हम वही पहले सॉल्व करते, क्योंकि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है. ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने कोई भी और ऑपरेशन करना है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन था, सो वी हैव सॉल्व डी मैथ्स रूल, दैट इज़ डिवीजन. आफ्टर दैट नाउ यू आर हैविंग प्लस एंड मल्टीप्लाई. अब क्या पहले करना है? डी मैथ्स. यू कैन सी डी डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन. यहाँ अब मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एम ए एडिशन, then we'll add the number and we'll get the answer, that is 19. Now another important concept that we are going to learn in this chapter is left to right rule. Left to right rule कब अप्लाई होता है? वो तब अप्लाई होता है जब आपके पास या तो दो छोटे ऑपरेशंस, विच आर टू स्मॉल ऑपरेशन. कौन से छोटे ऑपरेशन जो आप स्मॉलर ग्रेड से लर्न करते आ रहे हैं, आप क्लास 1 क्लास 2 से आप पढ़ते आ रहे हैं. सबसे पहले आपने किससे स्टार्ट लिया था? आपने नंबर्स को ऐड किया, देन आपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया. सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द स्मॉलर ऑपरेशन जो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. बड़े ऑपरेशन कौन से हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो जब भी हमारे पास या तो दो छोटे हमारे पास ऑपरेशन होंगे या दो बड़े ऑपरेशन होंगे, इनका मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है? या दो छोटे होंगे या दो बड़े होंगे, तो तब हमारे पास लेफ़्ट टू राइट रूल अप्लाई होगा. और कब ये होगा? जब हमारे पास जब दो छोटे ऑपरेशंस हैं वो रिपीट हो रहेंगे, या तो 2 दफ़ा प्लस आ रहा है या 2 दफ़ा माइनस आ रहा है. वहाँ आप कन्फ्यूज़न है कि कौन से नंबर को पहले प्लस करें या कौन से नंबर को पहले माइनस करें, या अगर बड़े दो रूल्स आ रहे हैं तो कौन से को पहले डिवाइड करें, कौन से को पहले माइनस करें, मल्टीप्लाई करें. You can see in that example 9 divided by 3 multiplied by 2 divided by 6. Here we are having division sign 2 times. Now you are confused that DMAS, according to DMAS we are going to divide first, but we are having division 2 times. तो हम पहले कौन सी डिवीजन करें? So इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने लेफ़्ट टू राइट रूल अप्लाई करेंगे. लेफ़्ट टू राइट मीन्स यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3. आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाई 6. नाउ इसी तरह 8 minus 5 plus 7 minus, you are having subtraction sign 2 times, so you are going to do what? You are going to use left to right rule. आप left to right करेंगे, पहले आप 8 minus 5 करेंगे. Let's move. Multiplying a number by 100. Our new topic is multiplying a decimal by 10. 10 से आप मल्टीप्लाई करें, when decimal is multiplied by 10. 10 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है, the decimal point moves one place to the right. It moves one place to the right. Here for example 3.548 divided by 10, answer is 35.48. That means our decimal has moved one place to the right. It has moved one place right. अब 0.5 के बाद आ गया, अब हमारे पास 35.48 है. You can see the example 3.14 multiplied by 10. Point is moved after 1 के बाद जब मूव हुआ तो आंसर is 31.4. 1 by multiplying by 10, that means we will move one place राइट की तरफ मूव करना है. डिवीजन में हम 1 place लेफ़्ट की तरफ मूव करते थे, और यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 place लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, सॉरी राइट की तरफ मूव करेंगे.
Now multiplying a number by 100 again. When you are multiplying by 100, what you will do, you will move decimal point to the right as many places as there are zero. कितने zeros हैं वहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास we are having 2 zeros. So you can see in the example 87.6 multiply by 100. हम multiply by 100 कर रहे हैं तो 87 था. अब हम 2 places move करें क्योंकि हमारे पास number of zeros कितने हैं? Number of zeros 2 हैं. So we are having point के बाद 6 एक number है तो 1 0 हम खुद से add करेंगे, that is 60.0. What will be the answer? 8760.0, because we have to move 2 places after 7. That means we will add 6 and then we'll add 0 by ourselves and 1 0 after the point. इसी तरह 0.005 मल्टीप्लाई बाय 1000. इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद ऑलरेडी 3 नंबर हैं. जब 3 नंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हमारा डेसिमल 1 पॉइंट मूव करेगा तो 1 0, देन दूसरा पॉइंट मूव करेगा तो दूसरा 0, देन एक और पॉइंट मूव करेगा तो 3 0. दैट मीन 3 प्लेसेस मूव करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 5.0. Now multiplying a decimal by 1000. Here how many places we have to move? In 1000 we have 3 0, so if we are having 3 0 we will move 3 places to the right. 3 places हम right तरफ move करेंगे. Now you can try these. 0.7 multiplied by 10, 1.3 multiplied by 100 and 76.3 multiplied by 1000. Here you will move 3 places to the right. 3 places कैसे move करेंगे? You can try it as we have done for 100 and tens. That means you'll move 3 places on the right. After moving 3 places to the right, 3 we are already having, दो ज़ीरो हमें खुद से ऐड करने पड़ेंगे. So it will be 7,063 Now success criteria. Let's discuss the success criteria. What will be it? Remember to divide a whole number by 100. Move the decimal point 2 places to the left. Now to divide a whole number by 1000, move the decimal point 3 places to the left. When all 4 operations are involved, use the mass rule. When there are 4 operations, plus, minus, addition, multiplication, first of all divide, then multiply, then add and then subtract. Now use left to right rule in case only multiplication, division or addition, subtraction is involved. जब just multiplication division होगी या just addition subtraction होगी, then we will use left to right rule. अगर इनका mixture होगा, then we will not use. Solve bracket first. If you are having a question that has brackets, first of all solve the bracket. बेशक उसमें प्लस है, माइनस है, कोई भी स्मॉलेस्ट साइन भी है, तब भी आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, then you will use other operations. When a decimal is multiplied by 10, the decimal point moves 1 place to the right. 1 place हम राइट की तरफ मूव करेंगे क्योंकि 10 है तो 10 में हम 1 प्लेस मूव करेंगे. When decimal is multiplied by 100, we will move 2 places क्योंकि 2 zeros हैं तो हम 2 places राइट की तरफ मूव करेंगे. And when a decimal is multiplied by 1000, हम 3 places राइट की तरफ मूव करेंगे. Thank you.